Good evening. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the line by line explanation for the grammar topic Bhasha, Lipi or Vyakaran. Lesson number 1, class 7 from the book Vyakaran Anand. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. So Bhasha is language, Lipi is script, Vyakaran is grammar. So here we will understand what is language, what is script, why we are using grammar. मनुष्य अपने मन के भावों को कई प्रकार से प्रकट करता है. So human beings can express his feelings in many ways. इसके लिए कभी कभी कुछ संकेत भी होते हैं. सो फॉर दिस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स वी हैव सम सिग्नल्स. संकेत ना जेस्चर्स. ओके, जैसे तो सी द पिक्चर हियर. द ट्रैफिक पुलिस डजंट हैव टू से समथिंग और राइट समथिंग टू मेक द पीपल इन एंड अराउंड हिम टू अंडरस्टैंड. ही जस्ट हैव टू वेव हिज हैंड्स, राइट? सो बाय सिग्नलिंग through his hands, he is able to communicate what he has to say, who has to stop, who has to go, isn't it? ஸோ அவர் எழுதி காட்டணுமோ இல்லை சொல்லணுமோ அவசியம் இல்லை. அவரோட ஜெஸ்டர்ஸ் மூலமாகவே அவர் சொல்லிடுவார் என்ன பண்ணணும் மற்றவங்க அப்படின்றது. See the picture. Mother is keeping his hands on the lips. It says that the kid has to keep quiet. அம்மா வந்து வாய் மேலே கை வச்சு காமிச்சாவே பசங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. We have to keep quiet. So through these small gestures we can express our thoughts and feelings, isn't it? ये सब संकेत की भाषा. This all are gesture language. इसका प्रयोग कभी कभी किया जाता है. We still use this gestures to make others to understand what we are feeling, what is our thought processes. अधिकतर हम अपनी बात बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करते हैं. But most of the times we express our feelings by writing or by telling. அபிव्यக்தனா express பண்ணுவோம். எப்படி? சொல்லி இல்லைனா எழுதி காமிச்சு. தட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம என்ன செய்வோம்? பேசுவோம் இல்லைனா எழுதி காமிச்சு நம்மளோட தாட் ப்ராசஸை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है. The medium through which we are able to express our thought by writing or by speaking is language. So the medium, the language மூலமாக தான் நம்ம மனசில் இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம சொல்லியோ இல்லை எழுதி காமிச்சியோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மீடியமாக தான் நம்ம பாஷான்னு சொல்லுவோம். பாஷா शब्द भाष धातु से बना. सो द मेन वर्ड इज भाष जिसका अर्थ है बोलना. दैट मीन्स स्पीकिंग, சொல்கிறது. जो ध्वनि संकेत हमारे मुख से किसी भाव या विचार को प्रकट करने के लिए निकलते हैं वह भाषा कहते हैं. द साउंड दैट कम्स फ्रॉम आवर माउथ टू एक्सप्रेस आवर थाट्स और द फीलिंग्स, அதுதான் நம்ம லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம வாயிலேருந்து வர சவுண்டை தான் விச் இஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் அவர் தாட்ஸ் और ப்ராசஸ் வி से एस लैंग्वेज. அதுதான் நம்ம லாங்குவேஜ் பாஷான்னு சொல்கிறோம். ये ध्वनि संकेत हर भाषा में खास अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं. ஸோ இந்த சவுண்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, ஒரு லாங்குவேஜில் அது ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன சவுண்டாக இருக்கும். இப்போ ஹிந்தியில் ஆ ஆம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அது வந்து ஆம்னா மேங்கோக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. அதே இப்போ அம்மா அப்படின்னு சொல்லும்போது தமிழில் அம்மா வந்து மதருக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு சவுண்ட் வந்து ஒரு மீனிங்க்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. रूढ़ हो जाते ना, அதுக்குள்ளே ஒன்றி போயிடும், स्टीरियोटाइप्डा ஆகிடும். अर्थात हर भाषा के ध्वनि संकेत का अलग अलग अर्थ होता है. ஸோ ஒரு லாங்குவேஜோட சவுண்டுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கும். ஸோ ஹிந்தியில் நம்ம வாட்டர் எப்படி சொல்லணும்? ஜல்லுன்னு சொல்கிறோம். தண்ணி ஜல்லுன்னு சொல்கிறோம். அதை இங்கிலீஷில் வாட்டர். ஸோ வாட்டர்ன்ற ஒரு சவுண்டு வரும்போது இங்கிலீஷில் தட் மீன்ஸ் வாட்டர், தண்ணி. ஹிந்தியில் ஜல்லுன்னு அப்படி சொல்லும்போது தான் அதுக்கு மீனிங் வந்து தண்ணி அப்படின்றது. ஸோ தண்ணிக்கு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் இருக்குது ஒரு லாங்குவேஜில், இல்லையா? ஸோ हिंदी में जल या पानी कहेंगे तो अंग्रेज़ी में वाटर. ஸோ ஹிந்தியில் ஜல் இல்லை பானி சொன்னால் இங்கிலீஷில் வாட்டர்னு சொல்கிறோம். हर भाषा में कहे गए ध्वनि संकेत अलग अलग अर्थ रखते हैं. ஸோ ஒரு லாங்குவேஜில் சொல்கிற சவுண்ட் வந்து ஒரு மீனிங்கை தான் கொடுக்கும். भाषा के 2 रूप होते हैं. ஸோ லாங்குவேஜ்க்கு 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ லாங்குவேஜ்க்கு 2 டைப்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஒன்று வந்து மௌக்கிக் இஸ் ஓரல் அண்ட் அனதர் இஸ் லிக்கித் இஸ் ரிட்டன். ஸோ ஓரல் சொல்கிறது, லிக்கித் வந்து ரைட் பண்ணுறது, எழுதுறது.
मौखिक, जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं. ஸோ நம்ம மனசில் இருக்கிறத சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது when you are able to talk, when you speak and express our thoughts, then it is said to be मौखिक भाषा. लिखित, जब हम अपने मन के विचारों को लिख कर अभिव्यक्त करते हैं. ஸோ நம்ம மனசில் இருக்க thought process when we write and express तो उसे लिखित भाषा कहते हैं. that is said to be लिखित. मौखिक and लिखित, मौखिकिல் நம்ம கேட்போம் சொல்லுவோம், लिखितல நம்ம எழுதுவோம் படிப்போம். मौखिक भाषा का जन्म लिखित भाषा से पहले हुआ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேச தான் ஆரம்பித்தோம். ஒரு சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம், சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேதர் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு லாங்குவேஜாக எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஆனால் எழுதுறது அப்புறம் தான் வந்துச்சு. ஸோ த பர்த் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட் எது मौखिक स्पीकिंग लैंग्वेज தான் फर्स्ट बॉर्न आச்சு. मनुष्य के मन में जब अपने विचारों को स्थायी रूप देने की इच्छा हुई होगी तो उसने भाषा के लिखित रूप का आविष्कार किया होगा. ह्यूमन बीइंगோட மைண்டில் when the thought process came that the things which we are speaking has to be kept in a permanent form, ஸ்தாயி ரூப்னா ஒரு பெர்மனன்ட் ஃபார்ம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் இந்த ரைட்டிங்கோட ரைட்டிங் லாங்குவேஜோட இன்வென்ஷனே ஆயிருக்கும். ஸோ आविष्कारना इन्वेंशन, लिखित रूप ना राइटिंग स्टाइल. आज से हज़ारों वर्ष पूर्व के शिलालेख इसी बात का प्रमाण है. ஸோ இன்னிலிருந்து ஒரு 1000 years பழைய இருக்கிற शिलालेख is encryption. शिलालेखना encryption is the proof for that. Okay, these are the few encryptions. பெர்மனண்ட்டாக நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி மனுஷன் யோசிக்கும் போது தான் அந்த ரைட்டிங் லாங்குவேஜே வந்திருக்கும். மனுஷன் हमेशा से ये इच्छा करता रहा है कि उसके विचारों को आने वाली पीढ़ियाँ जाने. So he has the thought process that the next generation should know what he was thinking. ये काम मौखिक भाषा द्वारा संभव नहीं था. This is not possible by speaking language which cannot be forward to the next generation all the time. ये उद्देश्य लिखित भाषा द्वारा ही संभव हो पाया. So in the objective of the next generation to know what was his thought process is possible only by writing language. So இந்த objective எப்போ fulfill ஆகும், writing language இருந்தால் தான் fulfill ஆக முடியும். लिखित भाषा द्वारा हम दूर के स्थानों पर भी अपने विचारों या भावों को प्रेषित कर सकते हैं. So we can send our thought process or our feelings to the distant places. दूर की ஸ்தானம்னா தூரத்தில் இருக்க ஸ்தானத்துக்கு கூட நம்ம எழுதி வச்சு அதை அனுப்ப முடியும். we can send it. ஆனால் மௌக்கிக்கு நம்ம சென்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா. அது ஒரு குறிப்பிட்ட கேட்குற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது புரியும், தூரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அது கேட்காது. ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ லிக்கித் பாஷா மூலமாக நம்ம தூரம் இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம அனுப்பி அதை தாட் ப்ராசஸை சொல்ல வைக்க முடியும். ஆனால் அது மௌखिकல கிடையாது. इसी रूप के द्वारा हमारे पास आज विविध भाषाओं का समृद्ध साहित्य उपलब्ध है. ஸோ இந்த லிக்கித் ப்ராசஸ் வந்தனால தான் இப்போ நம்மக்கிட்ட நிறைய லாங்குவேஜோட ஒரு ப்ராஸ்பரஸ் லிட்ரேச்சர் அவைலபிளாக இருக்குது. समृद्ध साहित्य उपलब्धना, समृद्धना प्रॉस्परस, साहित्यना लिटरेचर उपलब्धना अवेलेबल है. लिखित रूप भाषा को स्थायी तथा सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है. इन द राइटिंग स्टाइल ऑफ द लैंग्वेज लेना वी कैन एबल टू make the language to be kept permanent and be safe. So and the ability is there for the writing style of language. Speaking style of language ku and the ability kadiyadu. We cannot keep that as permanent or safe. So likhit style la நம்ம language safe ஆவும் permanent ஆவும் வச்சுக்க முடியும், and through which we can pass on our thought process to the next generation. लिपि script ना என்னன்னு பார்ப்போம். भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं. So and the symbols that is used to express the sounds. இப்போ இப்போ நம்ம symbols யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் அந்த சவுண்ட்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த சிம்பிள்ஸை தான் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். அந்த சிம்பிள்ஸ் எங்கேருந்து எடுத்திருப்பாங்க, ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து we can make many languages. ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் பார்த்தோன்னா இட் வில் ஹாவ் த சேம் லெட்டர்ஸ் இருக்கும், பட் வேர்ட்ஸ் கேன் பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ ஹிந்தியும் சான்ஸ்கிருத்தும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க. த வேர்ட்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். அந்த லெட்டர்ஸ் சேமாக தான் இருக்கும். யூ கேன் ரீட் சான்ஸ்கிருத் ஆல்சோ இஃப் யூ கேன் ரீட் ஹிந்தி, பட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சான்ஸ்கிருத் யூ ஷுட் நோ தட் ஒகாபுலரி. அண்டர்ஸ்டுட். இப்போ ரோமன் இந்த ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து தான் நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இங்கிலீஷ் எடுத்திருப்பாங்க. யூ கேன் ரீட் ஃப்ரெஞ்ச்,
because on the same letters will be there A, B, C, D, Z and the letters தான் இருக்கும். But to understand French, you should know that vocabulary. So this you have to understand. So ஒரு script and we can make many languages, but you should know the vocabulary of that language to understand when you're reading the script. So reading is possible, but understanding will come once you have that vocabulary. प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए कोई चिन्ह होता है. So each and every language has a symbol for the sound. As I said, A, B, C, Ka, Cha. So ஒரு language க்கு ஒரு soundக்கு ஒரு symbol இருக்கு. We have specific symbol for each sound in each language. इन चिन्हों से मौखिक भाषा को लिखा जाता है. Through this symbols only what we are speaking we are able to write. ये चिन्हों की व्यवस्था ही लिपि है. The arrangements of these symbols we say as लिपि script. So लिपि script लदा we have the symbols that is arranged in an order. प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होते हैं. और लैंग्वेज के और स्क्रिप्ट को we have a different script for different languages. हिंदी भाषा का जन्म मूलतः संस्कृत से हुआ. So the हिंदी भाषा has come from the Sanskrit language. संस्कृत तथा हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है. The script that is used to write Sanskrit and Hindi is देवनागरी. अधिकतर यूरोपियन भाषा, so यूरोपियन लैंग्वेजेस में रोमन स्क्रिप्ट यूज பண்ணிருப்பாங்க. रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है. So रोमन लंद दा रोमन, फ्रेंच, इंग्लिश all are taken from रोमन स्क्रिप्ट. उर्दू फारसी लिपि से, so उर्दू लैंग्वेज is taken from फारसी लिपि और पंजाबी is taken from गुरुमुखी स्क्रिप्ट. So और लैंग्वेज के और स्क्रिप्ट के you have to know the language and you also know the script for that. अधिकतर लिपियाँ बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है. Most of the languages the script எப்படி எழுதியிருப்பாங்க, left to right எழுதியிருப்பாங்க, बाएं to दाएं, so left to right. परंतु फारसी மட்டும் उर्दू लैंग्वेज फारसीலேருந்து எடுத்திருக்க स्क्रिप्ट மட்டும் दाएं से बाएं लिखा जाता है. इट इज रिटन राइट टू लेफ्ट எழுதுவாங்க. ஓகே, ஸோ உருது ஃபார்சிலாம் எடுத்தோன்னா இட் வில் பி ரைட். வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரைட் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு கீப் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட். But other languages if we take it, we have to start from left and we have to keep moving our hands towards the right direction. Boli dialect. So Boli வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் மட்டும்தான் பேசுவாங்க. It is not well expanded all over the places. भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है. The language that is spoken in particular region, particular locality we see as बोली. அது என்னன்னு சொல்லுவோம், லாங்குவேஜ்னு சொல்ல மாட்டோம், போலின்னு சொல்லுவோம். भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है. ஸோ பாஷா த ஒரு லாங்குவேஜ் பேசும்போது இட் வில் பி எக்ஸ்பேண்டட் ஏரியாவில் இருக்கும். पर बोली का क्षेत्र सीमित होता है. ஆனால் போலி பேசும்போது த ஏரியா இஸ் வெரி லிமிட்டட். ஓகே, குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டியில் இருக்கவங்க, ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க, ஒரு பர்டிகுலர் மவுண்டன் ரீஜனில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் சில டைப்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க. அது அங்கே மட்டும்தான் பேசுவாங்க. தே வில் ஸ்பீக் ஒன்லி இன் தட் பிளேஸ். இஃப் யூ மூவ் அவுட் ஆஃப் தட் பிளேஸ் யூ கேன் நாட் ஃபைண்ட் தட் லாங்குவேஜ் தேர். So the language, the standard language is available in the expanded area, but Boli is available only in the limited places. बोली के बारे में ये प्रचलित है कि बोली हर 10 कोस के बाद बदल जाती है. So this is the thing we have. The fact is the dialect changes for the first 16 kilometers. ஒரு 16 kilometersக்கு ஒரு style of language இருக்கும், that is बोली இருக்கும், that will keep changing. So बोली हर 10 कोस, 10 कोस is 10 miles, which is equivalent to 16 kilometers. So for each 16 kilometers we can see a new way of talking style बोली இருக்கும். Okay, so சென்னையில் நம்ம speaking language is different, தமிழ். மதுரையில் பார்க்கும்போது speaking language of Tamil is different. திருநெல்வேலி if you go, the speaking language will be different. So similarly in each and every state the speaking language style will be different. बोली தனியாக இருக்கும், அவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேர்ட்ஸ் அதில் இருக்கும், where that is limited to that area. बोली का साहित्य लिखित ना होकर मौखिक ही रह जाता है. there is no written literature for such बोली. அந்த குறிப்பிட்ட லாங்குவேஜ் பேசுவாங்களே, வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல, அதுக்கு எந்த லிட்ரேச்சரும் இருக்காது, வெறும் மௌக்கிக், வெறும் ஸ்பீக்கிங்கில் மட்டும்தான் அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகிட்டுருக்கும். हर बोली में लोक कथाएं व लोकगीत कहे सुने व गाए जाते हैं. ஸோ ஒரு ஏரியா நம்ம போகும்போதும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபோக் டெய்ல், ஃபோக் சாங்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த லாங்குவேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அப்போ அது வெறும் ஸ்பீக்கிங்கில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்கும். பூர்வி ஹிந்தி,
पश्चिमी हिंदी, मगधी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी आदि हिंदी की बोलियाँ. So हिंदीல இருக்க बोलियाँ which is talked to that limited place. So ஈஸ்டர்ன் சைடில் வெஸ்ட் சைடில் மகதி ஏரியாவில் மகதி ஹிந்தி மீன்ஸ் த ரீஜன் விச் வாஸ் ஆக்குபைட் பை மகத் கிங்ஸ். பஹாடி ஹிந்தி தட் இஸ் ஸ்போக்கன் இன் த மவுண்டன் ரீஜன்ஸ். ராஜஸ்தானில் பேசுகிற ஹிந்தி. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹிந்திஸ் அந்தந்த ஏரியா வரைக்கும் லிமிட்டடாக இருக்கும். அண்ட் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நம்மளுக்கு போலியாக இருக்குது. हिंदी भाषा तथा बोलियाँ. So we'll just know what is Hindi language and their बोलियाँ. वर्तमान हिंदी भाषा के जन्म का लंबा इतिहास है. So we have a long history for the current Hindi language that we are speaking now. दिल्ली मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा आधुनिक हिंदी का मूल है. ஸோ இன் டெல்லி அண்ட் மேரட்டில் பேசுகிறது எல்லாமே மாடர்ன் ஹிந்தியோட ஒரு டைப் தான். वैसे इसका जन्म अब्रंश भाषा से हुआ है. सो हिंदी लैंग्वेज वॉज बॉर्न फ्रॉम अब्रंश लैंग्वेज. अब्रंश भाषा ना इसे एंशियंट इंडो आर्यन लैंग्वेज. अब्रंश पाली प्राकृत से निकली और वह स्वयं संस्कृत से निकली. सो अब्रंश and the इंडो आर्यन लैंग्वेज is taken from ancient प्राकृत language and that is already from Sanskrit only. So संस्कृतலேருந்து தான் पाली प्राकृतலேருந்து இந்த अब्रंशலேருந்து இந்த हिंदी लैंग्वेज. भारत में बोली जाने वाली भाषाएं सार्य परिवार की भाषा. இதே நார்த் சைடில் பேசுகிற हिंदी लैंग्वेज is taken from आर्य परिवार. हिंदी दिल्ली मेरठல பேசுறது is taken from अब्रंश is taken from पाली प्राकृत and पाली प्राकृत has come from Sanskrit. இதே நார்த் சைடில் இருக்க இந்தியாவில் இருக்க பேசுகிற லாங்குவேஜ் हिंदी लैंग्वेज comes from आर्य परिवार. इन सब का मूल संस्कृत है एंड द मेन ऑरिजिन इधर फुल ऑरिजिन है संस्कृत दा. वैसे तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है. वी हैव डिफरेंट लैंग्वेज इन इंडिया. कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, उड़िया, असमिया, बंगला, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, गुजराती आदि. सो डू यू नो दिस लैंग्वेज எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ காஷ்மீரி இஸ் ஸ்போக்கன் இன் காஷ்மீர், பஞ்சாபி இன் பஞ்சாப், சிந்தி இன் மகாராஷ்டிரா, உடியா இன் ஒடிசா, Assamia in Assam, Bangla is in Pachim Bengal, West Bengal, Marathi is Maharashtra, Kannada is Karnataka, Telugu is Andhra Pradesh, Telangana, Tamil is Tamil Nadu, Gujarati is in Gujarat. हिंदी का प्रयोग पूरे भारत में होता है. हिंदी is used in the entire country. हिंदी भाषा देश के अधिकतर लोग द्वारा बोली और समझी जाती है. Most of the people in India they know Hindi, they understand and they speak Hindi. आज जिस हिंदी को हम पढ़ते व बोलते हैं वह खड़ी बोली का परिकृष्ट निकरा हुआ रूप है. सो इन टुडेज एराला நம்ம பேசுகிற हिंदी हिंदी language which you speak now or read and write is taken, is refined from खड़ी बोली. परिकृष्ट means refined. खड़ी बोली 10वीं शताब्दी के आसपास प्रयोग में आने लगी थी. सो खड़ी बोली इन द लैंग्वेज वॉज यूज इन द 10th century. धीरे धीरे ये साहित्य में भी स्थान पाने लगी. इट हैज़ ऑल्सो टेकन द प्लेस इन लिटरेचर तथा इसका विकास होता गया एंड इट हैज स्टार्टेड टू डेवलप. ஸோ खड़ी தான் நம்ம இப்போ கரண்ட் ஹிந்தி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். हिंदी पूरे देश की संपर्क भाषा है. कम्युनिकेशन के यूज़ பண்ணுற लैंग्वेज इस हिंदी. इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान के 343वें अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया है. इसे इज द हिंदी लैंग्वेज के 14 सितंबर 1949 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 343 इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज. राजभाषा ना ऑफिशियल लैंग्वेज और स्टेटस கொடுத்துருக்காங்க. हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, राजस्थानी तथा खड़ी बोली के लिए किया जाता है. ஸோ ஹிந்தி பாஷாவோட யூஸ் வந்து பிரஜ் பாஷாவில் இருக்குது, அவதியில் இருக்குது, மைத்திலியில் இருக்குது, ராஜஸ்தானியில் இருக்குது, खड़ी बोलीला இருக்குது. हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल आदि में बोली जाती है. सो हिंदी लैंग्वेज एंगेल्लाम पेसुरोम. वी स्पीक दिस लैंग्वेज इन द स्टेट उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. इस प्रकार हिंदी भाषा की 18 बोलियाँ या उपभाषाएँ हैं. सो इन द मादरी वी हैव 18 डिफरेंट सबसेट्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज. भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है. ஸோ பாஷா அதோட ஏரியா வந்து ரொம்ப பெருசு பேசுகிறது. पर बोली का क्षेत्र सीमित होता है. ஆனால் போலின்ற அந்த லாங்குவேஜை நம்ம ஒரு லிமிட்டட் ஏரியாவில் மட்டும்தான் பேசுவோம்.
பாஷாவோட க்ஷேத்ர ஏரியா இஸ் வெரி எக்ஸ்பேண்டட், விஸ்திருத்தா இருக்கும். போலியோட க்ஷேத்ர, போலி பேசுகிற ஏரியா வந்து ரொம்ப லிமிட்டட், சீமித்தா இருக்கும். भाषा तथा व्याकरण, वाई वी नीड ग्रामर. प्रत्येक भाषा की अलग अलग व्यवस्था होती है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी लैंग्वेज. विचारों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्द तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाता है. टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स वी हैव डिफरेंट वर्ड्स एंड वी हैव डिफरेंट सेंटेंसेस. ध्वनि, शब्द तथा वाक्य रचना व प्रयोग की उपयुक्तता व सार्थकता जानने के लिए कुछ नियमों का विधान किया गया है. सो वर्ड्स, साउंड एंड सेंटेंस फॉर्मेशनக்கான சூட்டபிலிட்டிக்காக, உபயுக்தான சூட்டபிலிட்டி, சார்த்தக்தான மீனிங்ஃபுல்னஸ்க்காக we have followed some rules, we have set some rules. So our legislation rules has been set so that the word, sound and the sentence can be used suitably and meaningfully. ये नियम ही व्याकरण कहलाता है. The rules that we have set is called as grammar. ஸோ ஒரு வார்த்தையோ ஒரு சவுண்டோ ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ரூல்ஸை நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ரூல்ஸை தான் நம்ம கிராமர்னு சொல்வோம். भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है. So to use the language in a pure form, we should know these rules. When you know the rules only, you will be able to use the language in a proper way. So the ethology that is used to make us to know the rules and regulations of the language is known to be व्याकरण. ethology தான், அந்த சாஸ்திரம் தான் நம்ம கிராமர்னு சொல்கிறோம். To make us to use the language in a pure way. व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना. ஸோ व्याकरणோட வேர்ட் மீனிங் இஸ் அனலைஸ் பண்ணுறது, டு டூ த அனாலிसिस. ஸோ व्याकरण मीन्स एनालिसिस. व्याकरण में वर्ण, सो लेटर्स, शब्द, वर्ड्स, वाक्यों की रचना, हाउ यू हैव टू मेक द सेंटेंस और उनके प्रयोग का चर्चा होती है. वी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन द ग्रामर पार्ट where we do the analysis of the letters, words and sentences. व्याकरण प्रयोग से न केवल भाषा के शुद्ध रूप को समझा जा सकता है, अपितु उसमें एक रूपता भी आ जाती है. Grammar is not just used to use the language in a pure form, but also the grammar is used to bring uniformity. एक रूपता is uniformity. ஸோ அதில் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி கொண்டு வரதோ இந்த கிராமர் தான். கிராமர் only helps us to speak the language in a pure form, in a right way and also bring some uniformity. किसी एक भाषा में बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द का कहीं भी वही मानक रूट अर्थ समझा जाएगा. ஸோ ஒரு வேர்டு ஒரு லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட ஸ்டாண்டர்ட் கன்வென்ஷனல் மீனிங், ஸோ மானக் ரூட் அர்த்னா ஸ்டாண்டர்ட் கன்வென்ஷனல் மீனிங்கை தான் நம்ம எடுத்துப்போம். भाषा विश्लेषण, उनकी रचना, प्रयोग तथा शुद्धता की जानकारी के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है. यू शुड नो द ग्रामर, द रूल्स टू analyze, to make the sentence, to use the sentence and use the language in the pure form. So if you know the grammar, if you know the rules, then you can use the language in a right way. So व्याकरणला we have varna vichar, shabd vichar and vakya vichar, where we can learn about the letters, the words and the sentence formation. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வரப்போகிற லெசனில் பின்னாடி படிப்போம். आगे अध्याय में हम वर्ण शब्द वाक्य के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे. विल रीड इन एक्सपैंडेड वे इन द कमिंग लेसन्स. याद रखने योग्य बातें, द थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर आफ्टर रीडिंग दिस लेसन. अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा है. ஸோ நம்ம தாட் ப்ராசஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸை சொல்கிறது தான் இல்லை எழுதுறது தான் லாங்குவேஜ். इस आधार पर भाषा दो प्रकार की हुई. सो ऑन दिस बेसिस इट इज़ 2 टाइप्स. मौखिक इस ओरल, लिखित इस रिटन. भाषा को लिखने के लिए जिस ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं. ஸோ அந்த லாங்குவேஜை எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள்ஸை வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவோம், விச் இஸ் நோன் அஸ் लिपि. हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है. और लैंग्वेज को और लिपि இருக்குது. लाइक संस्कृत और हिंदी की देवनागरी, अंग्रेज़ी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी. भाषा को क्षेत्रीय रूप बोली कहता है. ஸோ ஒரு இடத்துல மட்டும் பேசுகிற லாங்குவேஜை வி சே அஸ் बोली. भाषा की अपेक्षा इसका क्षेत्र सीमित होता है. कंपेयर टू द लैंग्वेज, बोली इज लिमिटेड एरिया. अंद और लिमिटेड एरिया मटन वी विल बी स्पीकिंग दिस लैंग्वेज. इसका कोई लिखित साहित्य ना होगा. इट डजंट हैव एनी रिटन लिटरेचर. इसमें लोक कथाएँ और लोकगीत होते हैं. वी हैव सम फोक टेल्स एंड फोक सॉन्ग्स. पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इन सब इसके उदाहरण. दिस आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बोली. आज की हिंदी खड़ी बोली कहलाती है. द हिंदी दैट वी आर स्पीकिंग कम्स फ्रॉम खड़ी बोली. 14 सितंबर 1949 को संविधान 343 में अनुच्छेद में
हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है. So on 14 September 1949, according to the Constitution 343, Hindi has been given as the राजभाषा official language. तभी से इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. So from that year onwards, 14 September is celebrated as Hindi Day, हिंदी दिवस. हिंदी पूरे देश की संपर्क भाषा. द कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऑल ओवर इंडिया इज हिंदी. भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान करवाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है. Use the language in their pure form, the rules and regulations which we have to learn, that is given by the grammar. So the ethology is the grammar which teaches us the rules to use the language in the pure form. व्याकरण भाषा को एक रूपता, शुद्धता तथा सुदृढ़ता प्रदान करता है. So the grammar only gives the uniformity, purity and strength to the language. अतः भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध है. Hence there is a strong and deep relationship between the language and the grammar. वर्ण, शब्द तथा वाक्य व्याकरण के अंग हैं. The letters, the words and the sentences are part of the grammar. So hope you have understood the topic. In the next video we'll see the book back exercise. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section and surely reply back. Thank you, students.